अब हम बात करेंगे स्टेप्स की या प्रोसीजर की दैट इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन ब्रेडफोर्ड एसे। जैसा कि हमने बायोरेट एसे में डिस्कस किया था दैट बायोरेट एसे हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ वॉल्यूम्स that particular method needs large volumes. Biuret assay has a plus point that we can use the volumes in microliter. We can work with the volumes, small volumes, and this method is preferred as far as its sensitivity and volume requirement is concerned. इस मेथड में भी हमें स्टैंडर्ड कर्व की ज़रूरत पेश आएगी फ्रॉम दी नॉन स्टैंडर्ड्स ऑफ BSA। लेकिन एक चीज़ को अगर हम लेके चलें दैट स्टैंडर्ड कर्व हमें तीनों एसेस में चाहिए, बट इन स्टैंडर्ड कर्व के लिए हमारी जो कंसंट्रेशंस हैं BSA की और जो वॉल्यूम हमने यूज़ की हैं दे आर ऑलवेज़ वेरिएबल। हमारे पास बायोरेट एसे में जो कंसंट्रेशन एस्टिमेशन की लिमिट थी दैट वाज इन मिलीग्राम्स। We talked about Lorry's method. We were able to determine the concentrations from 20 microgram up to 200 microgram. So with this method, we have better option to calculate or to find out the concentration which are even lesser. In this case, we are going to perform the same standard procedure that can determine 5 to 100 microgram per milliliter of protein concentration. Look at the sensitivity, 5 microgram protein can also be determined by this method. उसके बाद हमें जब स्टैंडर्ड कर्व बनाना है, जो BSA की डाइल्यूशंस हैं वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। 5 डाइल्यूशंस बनानी है, 7 डाइल्यूशंस बनानी है, 8 डाइल्यूशंस बनानी है, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर स्टैंडर्ड कर्व फॉर्मेशन। लेकिन जितनी भी डाइल्यूशंस बनाएं इसमें मिनिमम रेंज और मैक्सिमम वैल्यू का ख्याल रखना ज़रूरी है। 5 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम तक आपकी रेंज होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो अननोन सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 100 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा होगी, then you can increase your maximum concentration up to 200 microgram and accordingly you can prepare the BSA dilutions. अननोन सैंपल की डाइल्यूशन भी हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, चूँकि हम इसकी सैंपल वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू यूज़ 30 माइक्रोलीटर ऑफ द सैंपल वॉल्यूम फ्रॉम अननोन सैंपल और 30 माइक्रोलीटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। सो आवर अननोन सैंपल्स डाइल्यूशन शुड बी अप टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 30 माइक्रोलीटर। इसको हमें डाइल्यूट करना है ताकि एक तो प्रोटीन की रेंज हमारी जो स्टैंडर्ड कर्व की रेंज में आ जाए, और इस पर्पज़ के लिए हम 2-3 किस्म की डाइल्यूशंस बनाते हैं अननोन सैंपल की। देन वी टेक आवर स्टैंडर्ड BSA samples and our unknown samples, each in a different test tube labeled accordingly. Number 1 to 7 तक अगर हम BSA ले रहे हैं then we will label them 1 to 7. When we are using unknown sample, we will label them clearly: unknown sample dilution 1, unknown sample dilution 2, unknown sample dilution 3. Once the samples are in the respective test tubes, then we are going to add 30 microliter of water. Now, we are going to take 2 different tubes in which instead of protein, we are going to add 30 microliter of water. These tubes are going to be used as blanks. So I clarify here that we are having now 3 sets of tubes. One set is blank tubes. The second set is the standard solutions of BSA, and the third set of the dilutions of unknown protein samples. So in case of blank, we add 30 microliter of water. In case of BSA tubes, we add 30 microliter of respective volume of respective dilution of BSA. And in unknown tubes, we add 30 microliter of diluted protein sample of unknown concentration. Then we are going to decide whether we should perform this method in duplicates or triplicates. समटाइम्स क्या होता है कि हम एक सिंगल ट्यूब लेके चलते हैं और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन सीरीज से हट के आ जाती है बिकॉज ऑफ एनी एरर. इट कुड बी एरर इन द क्लीनिंग और क्लीनलीनेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इट कुड बी एरर इन द पाइपेट filter,
or it could be error in our pipetting. So it is always advised कि प्रोटीन ऐसे जब भी किया जाए वो डुप्लीकेट्स में या ट्रिप्लिकेट्स में किया जाए, ताकि अगर कोई एक वैल्यू आउट ऑफ द रेंज हो गई है या गड़बड़ कर रही है तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज़ हैं दे कैन बी कंसिडर्ड. Once we are ready with the tubes along with their samples in it, then we add 1.5 milliliter of Bradford reagent, mix well using vertex mixer, and then we incubate them at room temperature for 5 minutes. Prolonged incubations are not required. जैसे कि दूसरे methods में है we have to incubate for longer times. इस particular method में 5 मिनट की incubation sufficient enough है to get our color and to proceed further for optical density measurement. After the 5-minute incubation, we use a spectrophotometer to get the optical density or absorbance at 595 nanometer, and then we plot the results in standard curve.